नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर संदीप चौहान, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। सो आज हमारे पास पेशेंट है। मैम की जो कंप्लेन है, इनको बॉडी में स्टिफनेस लगती है। जब ये सुबह उठते हैं तो इनको जॉइंट्स में दर्द महसूस होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। डायग्नोस करेंगे और मैम का फुल बॉडी एडजस्टमेंट आज हम देखेंगे। ठीक है मैम, सीधा लेट जाएं पर आप। सो हम इनके बेसिक टेस्ट एक बार कर रहे हैं कि किसी कुछ डिस्क का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। सो दिस इज SLR। हम एक बार पैर सीधा उठा देंगे। कोई भी दर्द आपको आ रहा है? कितना और ले जा सकते हैं? ठीक है। सो हैमस्ट्रिंग की मसल जो इनकी है वो टाइटनेस में है। दूसरा पैर उठाएंगे सीधा। कोई दर्द आ रहा है? ठीक है। अभी कोई पेन आपको महसूस हो रहा है? कोई पेन महसूस कर रहे हैं? ठीक है। सो इनका SLR और फेवर्स जो टेस्ट है दोनों पॉजिटिव आए हैं। ठीक है मैम, एक बार उल्टा लेटेंगे। सो हम लेग लेंथ की टेस्टिंग करेंगे फर्स्ट अलाइनमेंट के लिए। सो व्हेन आई एम चेकिंग, जिनका राइट लेग है वो शॉर्टनिंग में। So this is the reactive leg. So आप ध्यान से देखेंगे। So इनका जो राइट लेग है वो शॉर्टनिंग में है। So this is the reactive leg. करेक्ट करते हैं। So now we starting palpation. Cervical spine से हम शुरू करेंगे। So जैसे जैसे मैं एक फिंगर नीचे जाता हूँ, स्पाइनल मूवमेंट्स हम चेक कर रहे हैं। सो आप C7 से नीचे वाला जो इनका एरिया है, मैम की सिटिंग जॉब होने की वजह से यहाँ पे लिटिल बिट इन्फ्लामेशन हमें दिखाई दे रही है एंड इट्स कॉल्ड हम्प नेक। जो इनका पोस्चर है वो फॉरवर्ड है। ज़्यादा सिटिंग की वजह से इनकी जो पोजीशन है वो ठीक ना होने की वजह से उन्होंने गलत पोस्चर डेवलप किया है एंड दैट्स व्हाई इनको बॉडी में नेक में पेन रहता है। नाउ फर्स्ट वी adjust the spine. Comfortable? So now we palpate SI joint. So अगर आप ध्यान से देखेंगे, this is misalignment. ये ड्रॉप हो रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है। करेक्ट करेंगे। So now we check the SI joint. ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें डिफरेंस मिल रहा है। ये हल्का सा अप जा रहा है और ये little bit डाउन। करेक्ट करेंगे इसको। Now we go for the simple MFR. This is a cross and MFR for release the muscles. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Wonderful. Little bit sacrum mobilization. Good. Now we go for the thoracic spine. Simple oscillate or release the fascia. So when I'm palpating, जो thoracic spine हमारी है T1 से लेके T12 तक के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें ज़्यादा टाइटनेस में मिल रहे हैं, मोबिलिटी कम मिल रही है। करेक्ट करेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ दें। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ दें। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ दें। एक लंबा सांस, छोड़ दें। रिलैक्स। गुड। वन मोर। रिलैक्स। वन मोर। रिलैक्स। गुड। वन मोर। वेरी गुड। गुड। One more.
relax. One more. Good. Now we start the lumbar spine. Rolling. Breathe in and breathe out. Breathe out. Good. Very good. Good. Now we go for the cervical spine. So when I'm palpating cervical spine, जो फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी टाइटनेस में, सो गलत पोस्चर में बैठने की वजह से लॉन्ग सिटिंग, और मैम का जो वर्क है वो लैपटॉप पे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से काइफोटिक पोस्चर इन्होंने डेवलप किया है, इसका फॉरवर्ड हेड पोस्चर. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग सबऑक्सिपिटल मसल रिलीज. It's very beneficial to neck pain, headache, and muscle stiffness. ढीला छोड़ेंगे. Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Good. लंबा सांस छोड़ दें. छोड़ दें. Good. After the manipulation, just breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now we activate the trapezius. Breathe in, breathe out, breathe out, breathe out. Good. Breathe in, breathe out. Good. Now we go for the TMJ correction. Breathe in, breathe out, breathe out. Good. छोड़ेंगे. दोनों हाथ सर के पीछे रखें. रिलैक्स. पैरों को सीधा रखेंगे. बॉडी ढीला. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. वन मोर. Now we go for the lumbar spine. Breathe in, breathe out. Good. Loose छोड़ेंगे. Body loose, body loose. Good. One more. Back. Breathe in, breathe in, breathe out. Good. One. Breathe in. Good. Start it. Good. Breathe in and breathe out. Good. Breathe in, breathe out. Good. Good. आज हम देखेंगे नेवल डिस्प्लेसमेंट मैम का प्रॉब्लम है. इनकी जो कंप्लेन है, इनको एसिडिटी और ब्लोटिंग से काफ़ी समय से परेशान है. करेक्ट करेंगे. सो व्हेन वी पैल्पेट, इस तरफ नाभि सरकी हुई है, इसको सेट करेंगे. बॉडी को ढीला छोड़ेंगे. एक पैर मोड़ देंगे ना, एक पैर मोड़ेंगे, सीधा कर देंगे. एक पैर मोड़ेंगे, सीधा कर देंगे. बस हो गया. चलिए दोनों पैर मोड़ेंगे. बॉडी रिलैक्स. फिर से मोड़ेंगे. दोनों पैर मोड़ेंगे, दोनों पैर मोड़ लेंगे. बॉडी को ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला. लंबा सांस लेके छोड़ेंगे. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. One more. Breathe out, breathe out, breathe out. Good. One last. Good. सेट हो गई. मैम आफ्टर द ट्रीटमेंट कैसा लग रहा है, एक बार आप वॉक करके देख के चेक करके बताएंगे.